जी। ऑनरेबल रेलवे के इस चर्चा में जो 72 के आसपास माननीय सांसदों ने जो पार्टिसिपेट किया डिबेट में, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। कई माननीय सांसदों के अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जी जी महोदय, भारत विभिन्न प्रकार के आपदाओं को झेलता है और भारत के लगभग सभी हिस्सों में, लेकिन यह भी सच है कि विगत वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कुशल आपदा प्रबंधन के कारण नुकसान में काफ़ी कमी आई है। कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति और अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को लीगल स्टेटस प्रदान करना भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कई कदम उठाए गए हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। फिर भी कुछ कमियां महसूस जब की गई है राज्यों के द्वारा और अन्य हितधारकों के द्वारा, उसका परिणाम आया है। संक्षिप्त में उसका मैं चर्चा करना चाहूँगा। महोदय, 2016 में एनडीएमए द्वारा पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई और इस विकसित की गई योजनाओं को पूरा एनडीआरएफ में 4 बटालियनों को बढ़ाया गया है। कुल बटालियन अब 16 है। चक्रवात के लिए सामान्य अलर्ट प्रोटोकॉल योजना के माध्यम से तत्काल अलर्ट किया जाता है। पूर्व से जब आवेदन नहीं मिलता है, हम राज्यों को सूचना करते हैं। जब आवेदन नहीं मिलता है, हम राज्यों को सूचना करते हैं और राज्य उस सूचना का संज्ञान लेकर जब हमें सूचित करता है तो हम जाते हैं। हम उनके आवेदन का, हम उनके अनुरोध का इंतजार नहीं करते। चक्रवात जोखिम समन इंतजार नहीं करते। चक्रवात जोखिम समन और मोचन हेतु वे उसके ठीक पहले 2015 के ठीक पहले 2040 लोगों की जान गई थी और 2024 में वह घटकर 244 हो गया है। एनडीआरएफ ने भी अपने ऑपरेशन के माध्यम से बहुत लोगों की जान एकत्र करने और डीआरआर के लिए नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास हुआ है। इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना हुई है। अब तक 338 संस्थान इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं। एनडीआरएफ द्वारा मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को 2015-20 की तुलना में वर्ष 2021-26 में लगभग 3 गुनी राशि दी गई है। और अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तुलनात्मक, तो मैं चाहूँगा कि चूँकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है और यह विधेयक आज के समय की जरूरत है, जिसमें सभी मॉडर्न डायनामिक्स परिभाषित किए गए हैं और इस रिगार्डिंग आपदा प्रबंधन
disaster management. So I request all the members to be present here and give their important views. So I request Shashi Tharoorji. Now, Mr. Speaker, you don't have to be a constitutional expert to realize that social security and social insurance, employment and unemployment, which is the subject of entry 23, does not even remotely cover disaster management. It's another matter that had the government actually tried legislating on the issue of unemployment of 2005 was in need of rigorous reform. And yes, there is a pressing of 2005 was in need of rigorous reform. And yes, there is a pressing need to streamline our sprawling and scattered disaster management framework, which, despite the best of intentions, ends up causing inordinate delays in the worst moments, failing to rescue our fellow Indians. Net result is a greater centralization of the Disaster Management. Net result is a greater centralization of the Disaster Management Act 2005 and a top-down approach that will create a chain of command so complicated and heavy that it may collapse under its own weight before even mitigating bombardment of rocks and boulders. In the early hours of 30th July, I met a young survivor who had endured inconceivable horrors. Just 8 years old, sir. She had lost her father, mother, brother, sister, grandfather and grandmother, and sustained numerous injuries from broken bones to heavily. Right off the bat, this bill promises, as I mentioned, greater clarity and convergence in the roles of authorities and committees working in the field of disaster management. But in reality, it confuses and complicates and typically just concentrates power in the hands of the central government. This is evident by us, experts of various kinds who can help us predict, prevent, prepare for and mitigate natural disasters. This disdain for expertise, Mr. Speaker, is a recurring theme of this bill. Now, given that we already have a National Executive Committee which is empowered to act as the coordinating, ultimately both these funds shall be applied in coordinates with the guidelines laid down by the central government in consultation with the NDMA. So there's no autonomy to this high-level committee. So once again, the question arises, what exactly shall be the powers of the statutory body? What exactly shall be the powers of the statutory body? This bill, in its introduction, the buck has to stop somewhere, Mr. Chair. And for better coordination of disaster management and mitigation efforts, the NDMA should have been it. They should have been upgraded to a department of the Government of India, even if not to a ministry, but it remains subordinate to the whole. One of the most pressing criticisms of the old Act was the excessive centralization of fund allocation. Many of our states have complained about this, especially when disasters are categorized as severe. The debilitating human cost of such a disaster, officially designated as severely drought affected by the Interministerial Central Team, and the subcommittee of the National Executive Committee recommended financial aid for the state, but despite this, the states, Congress ruled IRF and NDRF, offer no provisions for such a declaration. The lack of financial aid from the NDRF, under the perversely misguided assumption that the SDRF would suffice, has left us in an unenviable position, sir. With no interim aid forthcoming, Kerala had visited Wayanad from the 8th to 10th of August, and the central government would take action based on its request. August, sir. They're supposed to take action within 1 month according to the existing Act. To this date, no action has been taken, and no additional funds have been arranged for Wayanad. This measure will be toothless, sir. While the government appears to have recognized that district administrations across India should tackle emerging threats on their own terms and in line with local conditions, it has overlooked the dismal fact that in our country, the total municipal expenditure accompanies urban local bodies. Now, this creation of these bodies could have been a good step towards sustainable urban spaces, but it will be useless without effective devolution of finances. This flies in the complete logic of the original purpose of these committees, which was to foster greater collaboration amongst various ministries, sir, of the union and state governments. Federalism, cooperative federalism. Where is the cooperative federalism here? So, the bill's civil rights. This has been an issue for years, but the bill would have been an opportunity to fix it, because we are learning lessons from what hasn't worked in the earlier version. You've instead squandered it, Mr. Minister.
You will, of course, carry out relief assistance to classify coastal erosion or heat waves as notified disasters under the Disaster Management Act 2005. Now, this is crazy. We need to expand the list of notified disasters, given our own experience since the act was passed in 2005. Please, we would have made it a national issue. We have lost 65 kilometers. Please, we would have made it a national issue. We have lost 65 kilometers to natural disasters. We don't seem to care. I'm sorry, sir. According to the All India Meteorological Department, 2024 has witnessed already a staggering 536 heat wave days. Statutory list remains static and unimaginative. It obstinately ignores the realities that our citizens are enduring, sir. This is a dangerous oversight, as the impacts of such events, widespread loss of life, 2% of Wayanad's forests having disappeared since 1950, ceaseless soil erosion made more relentless by rainwater seeping into loose topsoil, which reduces soil cohesion and contributes to landslides, and soil piping, the formation of underground tunnels because of subsurface soil erosion. I want of the government's insistence to rush it through Parliament. But let me ask the Honourable Minister in all earnestness, what good will bulldozing this bill through Parliament do if it cannot prevent another Wayanad? Where are the provisions for disaster prevention, like landslide mapping, coastal protection measures? Second, I'm just finishing. It should make disaster relief a legal right, revive the parliamentary forum on disaster management to give the MPs' views a chance to be heard. Okay. And this bill does not have any of these qualities. Therefore, it must be returned to the drawing board, and I urge the minister. और राज्य की राजधानियों में UDMA स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। मैं समझता हूं कि ये एक नई अवधारणा है और निश्चित रूप से ये बहुत कारगर साबित होगा, प्रतिक्रिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो स्थानीय जो प्रशासन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर हवाई सेवाएं भी उस समय बाधित हो जाती हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जोखिमों का जो आकलन है और संसाधन आवंटन आवश्यकताएं जो ज़रूरत होती है स्थानीय आधार पर, वो ध्यान में रख करके ही और योजना आगे बनाई जाएगी। उससे जो प्रभावित जो लोग हैं उनको उससे मदद मिलेगी, में सुविधा होगी। जो प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी और इसमें AI का इस्तेमाल करने की जो बात है, जो पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुधार ये किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपदा है इसके कारण जो हमारे नौनिहाल हैं आने वाले हैं, पिछले 10 सालों में लगभग 3,70,00,000 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। उनका जो मानसिक विकास है वो प्रभावित हुआ है, उनका शारीरिक विकास ये प्रभावित हुआ है और उनकी